Hello students, today we are going to start another topic, that is your human digestive system. जनरली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड. इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन एंड आल्सो एसेसरी ऑर्गन्स. एंड मेजर ऑर्गन की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिव. एंड एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इट इंक्लूड लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज. सो this is the diagrammatical representation of human digestive system. That is, it consists of that is mouth, then we have these salivary glands here within the buccal cavity, then tongue, epiglottis, esophagus, liver, stomach, then gallbladder. This is the stomach, this one is the liver, gallbladder, then this is the duodenum, then we have ileum, that is part of small intestine, then we have cecum, colon, and rectum. So फर्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज मेजर ऑर्गन्स. मेजर ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट माउथ. माउथ जो है फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, और वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एंट्री ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू माउथ. एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इट लीड्स टू अ बक्कल कैविटी विच कंटेन दैट इज टीथ एंड कंटेन टंग. सो टीथ की बात करें तो टीथ जो है वो कट करता है फूड को, टेयर करता है, क्रश करता है एंड ग्राइंड द फूड. वेयर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो दे सिक्रेट द सलाइवा into the oral cavity. And what the function of saliva? Saliva जो है it moisten the foods, food को soft करता है, and also it contains some enzyme जिसे हम बोलते हैं salivary enzyme, amylase or ptyalin, and this amylase is responsible for the digestion of carbohydrates. So we can say that digestion of carbohydrates began in the that is your buccal cavity. Now we talk about function. It is responsible for the mechanical digestion of food and increased surface area for faster chemical digestion. Then we talk about esophagus. Esophagus जो है ये ट्यूब है जो कनेक्ट करती है माउथ को स्टोमक के साथ, एंड ये रन करती है थ्रू आउट थायरॉइड कैविटी. एंड अगर हम इसकी esophagus की बात करें तो मेनली ये लाई करते हैं. दिस इज द esophagus, दिस वन. Okay, so this is the tubular structure. So this runs behind the windpipe, that is lies behind the trachea, and trachea has a epiglottis and which prevents the passage of food into the windpipe. So moving the food out to the esophagus while swallowing. Now we talk about अगर esophagus की बात करें तो this esophagus undergoes, the inner wall of esophagus undergoes rhythmic contraction and relaxation, that is wave like movement जिसे हम बोलते हैं peristalsis. So ये याद रखो, important है. So food travel down through esophagus through a series of involuntary rhythmic contraction, that is wave like, called peristalsis. So due to this peristalsis, the food is pushed toward the stomach. And now we talk about the function. The lining of esophagus secretes mucus, which lubricates the food, and it also supports the movement of food towards the stomach. Now next is here we use term, that is this is the bolus or this is the chyme. And bolus and chyme means it is the semi and digested food को हम ये term use करते हैं. Now अब हम esophagus की बात करें. So this esophagus जो है it opens into the stomach through a sphincter जिसे हम बोलेंगे, we use term cardiac sphincter, या we also use term lower esophageal sphincter. So bolus reaches the stomach, and bolus here term is for bolus or chyme. It is mainly used for semi digested food. So ये पास होगा into the stomach through a sphincter, and sphincter is known as lower esophageal sphincter, or also known as cardiac sphincter. And this cardiac sphincter prevents the backward entry of food into the that is esophagus. Now and ठीक है ना, तो इनका फंक्शन क्या है? सो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो इनटू द esophagus, दैट इज बैक फ्लो ऑफ bolus or chyme into the esophagus.
नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज स्टमक. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टमक, तो स्टमक जो है ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है. इट हैज़ इनर फोल्ड्स. व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, तो ये प्रोड्यूस करता है इनर फोल्ड्स, जिसे हम बोलते हैं वी यूज टर्म रग. एंड दीज रग्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक. फंक्शन की बात करें तो स्टमक फॉर मैकेनिकल डाइजेशन. एंड बाय किस तरह से, तो बाय चर्निंग द बोलस एंड मिक्सिंग इट टू द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ स्टमक. सो ये काज करता है मैकेनिकल डाइजेशन. बट हाउ, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, तो ये मिक्स करता है फूड को किसके साथ, मिक्स द फूड टू द गैस्ट्रिक जूस and churn it completely. And gastric juice we have HCl, then we have some salts, enzyme, water and mucus. HCl जो है ये ब्रेक करता है फूड को एंड किल करता है बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होते हैं. एंड द बोलस इज नाउ कॉल्ड, और उसे हम क्या बोलेंगे, द बोलस को हम बोलेंगे अब चाइम. सो चाइम इज द सेमी डाइजेस्टेड फूड. ओके, सो नेक्स्ट इज एंजाइम इन द स्टमक. कौन कौन से एंजाइम हमारे स्टमक में प्रेजेंट हैं. अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे स्टमक में जो इन्वायरमेंट होता है इट इज एसिडिक ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ HCl. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl. HCl जो है वो किल करता है माइक्रोब्स को एंड ये क्रिएट करता है pH दैट इज 2. एंड म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ. लेकिन इन टर्न द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ कंसंट्रेटेड acids, then how the stomach protect itself from the HCl. So inner wall of the stomach produce mucus जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है HCl से. उसके बाद HCl के बाद देर आर सर्टन पेप्सिन सिक्रेशन. एंड पेप्सिन जो है दैट इज प्रोटीएसेस मेनली, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मेनली फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. एंड इनकी अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन को तोड़ देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में. और ये एंजाइम जो है मेनली पेप्सिन, ये दैट इज एसिडिक कंडीशन में ही ये एक्टिवेट हो जाता है. मतलब इफ टॉक अबाउट पेप्सिन, मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव फॉर्म दैट इज pepsin in pro-renin form and get converted into or get activated into pepsin and renin, and they are responsible for the breakdown of that is proteins. Now we use term pyloric sphincter. what it is, अगर हम स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक जो है लीड्स करता है into small intestine that is duodenum part of small intestine through a sphincter, and the sphincter is known as pyloric sphincter. And pyloric sphincter जो है again it prevents the passage of food into the small intestine due to mechanical or chemical digestion of food within the stomach. Now stomach does not digest itself. Why? ठीक है ना. अगर for example अगर we can say that if there is a secretion of HCl within the stomach, then how the stomach protect itself from the HCl. तो इसके लिए कहा गया है कि जब देर आर 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. फर्स्ट एक है कि जो स्टमक है वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस अंटिल फूड इज प्रेजेंट. उसके बाद ये सिक्रेट करता है म्यूकस जो कोट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड प्रोटेक्ट करता है दैट इज HCl से. एंड थर्ड इज क्योंकि जो पेप्सिन एंड रेनिन मैंने आपको पहले बोला दे आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, एंड इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देम HCl is utilized. So HCl combined with propepsin and renin और उसे एक्टिवेट करता है. सो कहीं ना कहीं जो HCl है कहीं यूटिलाइज हो रहा है, कहीं पर स्टमक इटसेल्फ कुछ प्रोड्यूस करता है म्यूकस, जिसकी वजह से वो अपने आप को HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है. Next part is the small intestine. If we talk about small intestine, तो small intestine responsible for the complete digestion of food and the absorption of their component molecule. Example जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लाइसरॉल की बात करें, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. सो अगर बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन एज वेल एज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. Now we study how the absorption of food takes place in the small intestine. So first parts of small intestine, parts की बात करें तो mainly small intestine के 3 parts हैं. First duodenum, then jejunum and then ileum. सो ड्यूडेनम, जूजिनम, इलम की बात करें. सबसे पहले ड्यूडेनम की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. इट इज यू शेप्ड ऑर्गन. अप्रोक्सीमेटली इसका साइज रहेगा दैट इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड द एरिया कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस. Enzymes are secreted into the duodenum from the pancreas and the gallbladder, and the duodenum is lined by folds or tissue called villi. The villi are again covered by brush-like microvilli.
and these fold increase the surface area for the absorption of food. Then we talk about jejunum, and the jejunum is approximately 2.5 centimeter long, and although some digestion is completed here, it has more villi and microvilli, and its role in the absorption of nutrients. So we can say that maximum absorption of food takes place in jejunum. उसके बाद तीसरा पोर्शन इलियम approximately 3 meter long, and it has fewer microvilli and villi than other two parts, and although absorption occurs here, it is responsible for pushing the waste material into the large intestine. So mainly जो question arise होता है कि in which part of small intestine the maximum digestion and absorption of food takes place, that is your jejunum. ठीक है. So next is your this is the esophagus. These are your parts. ये है, this is duodenum, and this is now function of small intestine. तो maximum अगर हम बात करें तो 90% digestion food की and absorption food की होती है small intestine में, and only 10% digestion of food takes place in stomach and large intestine. और जो मेन फंक्शन यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फ्रॉम द ब्लड. सबसे पहले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं. तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए यहाँ पर प्रोड्यूस में सर्टेन एंजाइम आर नोन एज द डिस्ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को तोड़ते हैं इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स में एंड फाइनली इनटू अमीनो एसिड्स. If we talk about digestion of lipids, for lipids there is enzyme known as lipase, and these lipase breaks down lipids into small droplets. And next is your digestion of carbohydrates. Digestion of carbohydrates की बात करते हैं. तो digestion of carbohydrates means complex into simple form, breakdown of complex carbohydrate, that is glycogen and your starch into glucose, and mainly takes place by the enzyme is your amylase, जो carbohydrates को तोड़ेगा. So how in this way different types of enzyme are responsible for different types of for the digestion of different types of that is food. So अगर absorption की बात करें तो the nutrients are absorbed by inner wall of small intestine into bloodstream, and these nutrients are absorbed by the process known as diffusion, by passive diffusion, by active transport, or by secondary active transport. Okay, तो दैट इज यहाँ पर अमीनो एसिड की बात करें तो मेनली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ग्लूकोज की बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फ्रुक्टोज की बात करें बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लिपिड्स की बात करें सिंपल डिफ्यूजन. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट इज कंपोनेंट डिफ्यूज्ड आर absorbed by different ways. Okay, so absorption of food takes place in the small intestine. Next is your large intestine, and large intestine की बात करें तो मेनली ये 3 पार्ट से बना है, that is your cecum, colon and rectum, and colon consists of 4 parts: ascending, transverse colon and descending colon, sigmoid colon and rectum. cecum की बात करते हैं तो ये फर्स्ट सेक्शन है किसकी, that is this is the cecum. So it is the first part of your large intestine, and it like a pouch, and it is about 2 inches in that is inches long. Okay, and it leads into a vermiform appendix, and its function taking off digestive liquid from the ileum and passes it to the colon. Now is your colon. It is the major portion of the, this is colon, so it is the major portion of the that is large intestine, and the principal place of the function is the absorption of water, absorption of salts, and component जो है इसके 4 components है. ascending colon, so this is the ascending colon, this is transverse colon, descending colon and sigmoid colon. So ascending colon की बात करें, ये फर्स्ट पोर्शन है colon का. It pushes any undigested debris from the cecum and just under the right lower end of the liver. Transverse की बात करें, second colon portion है, and food traveling from left to right just under your stomach. Descending colon की बात करें, ये थर्ड पोर्शन है colon का, ये push करता है content from down to the lower left side of your abdomen. And sigmoid colon, its final and its shape length of the colon, length of the colon, and it empties into rectum. Now what the rectum is, the final section of your alimentary canal is the rectum, measure about 1 to 1.6 inches in length, and it's left our waste collect there. So whatever that is undigested food or waste product की हम बात करें तो वो यहाँ पर collect होता है, and it undergo expansion too, and it empty through anus, and it leads outside through anus, through which the waste product is removed from the body. Now function of large intestine की बात करें तो mainly absorption of water. So one of the primary function is to absorb water and prepare the waste in the form of stools,
and that will expel from the body. उसके बाद next function is absorption of mineral, that is beneficial bacteria, role in breaking down undigested sugar and fibers in fatty acid, produce many vitamins, of which are vitamin K and biotin, that are absorbed back into the body. After that, reduce acidity, and the fatty acid cause acidic environment, and ये लार्ज इंस्टेंट जो है ये प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन सॉल्यूशन विच प्रोड्यूसेस द एसिडिटी एंड बैलेंस द पीएच इन द लार्ज इंस्टाइन. उसके बाद प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से. द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंस्टाइन वर्क करता है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड दे प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी. And of course they produce some antibiotics, and which help in to boost immunity. And it is believed that the appendix की हम बात करते हैं तो it is major role in producer of antibiotic at some point of evolutionary process. Now we talk about other accessory organs. एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है लेकिन सपोर्ट करते हैं डाइजेशन में. सो इनमें जो हमारे पास हैं दे इंक्लूड लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज. सो लिवर आपको पता है लार्जेस्ट ऑफ दिस ऑर्गन्स एंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का. इसका वेट अगर हम बात करें अबाउट 1.5 kg, एंड ये प्रोड्यूस करता है बाइल. एंड व्हाट द बाइल इज, बाइल जो है ग्रीनिश येलो पिगमेंट है जो bile salt content करता है, and it is responsible for the breakdown of old RBCs and also cause the emulsification of the fats. gall bladder जो है स्टोर करता है बाइल को and उसे रिलीज करता है into the jejunum part of the small intestine. ठीक है, तो ये बाइल जो है really how it works, तो बाइल is produced by the gallbladder into the liver through bile duct, which cause the emulsification of the fats, thereby asserting their absorption. Next is your pancreas. Pancreas की बात करें, so the pancreas secrete a number of different enzymes in the small intestine, and इसका function है digestion of carbohydrate, lipid and proteins, and also it's secreted bicarbonate ion, and it neutralizes the HCl from the stomach and changes the pH of small intestine into pH of 8. So जो पैनक्रियाज रिलीज करता है 1 liter of pancreatic juice per day. So it's all about that is digestive system of human beings. Thanks.